सब जब टेस्ट करते हैं उसमें केको टेस्ट किया जाता है. when we test उसमें केको लेयर बनाई जाती है सेल्स की, and then you take your drug, you dissolve in a whichever solvent you have, and then you see उस वो परमेट करके दूसरी तरफ जाता है या नहीं जाता ड्रग उस चैम्बर के अंदर. So it tells you whether it will cross distribution, the drug will pass on. So that's a Keiko test for absorption, whether it will absorb or not. Same way, these are various enzymes जिसके टेस्ट बने हुए करने को. Distribution again in the plasma, what drugs, whether it's absorb, whether it will bind to the plasma protein or not, कितना volume होगा. Blood-brain barrier, I think I mentioned yesterday or day before, if the drug which is needed to pass for brain, अगर वो उसको cross नहीं करता तो drug is not going to be effective. It can be effective other places. So you have these tests. So when we do these tests, for example in my lab or any lab that does drug discovery, drug development, when you try to see if it has to get to the brain, it has to cross the BBB, blood-brain barrier. It has to pass. So ये various tests बने हुए हैं जो किए जाते हैं. ERG toxicity is the human ether agogo related gene. Very commonly you hear this ERG toxicity for cardiotoxicity, heart के लिए, कि उसको जो ERG की toxicity, that's an enzyme which is extremely important for cardio functions. And अगर वो cardiotoxic है drug, तो ऐसा नहीं कि अगर drug वो कैंसर पे काम कर रहा है मगर वो उसके कारण हार्ट असर हो रहा है. And there are drugs actually. So we are working on many of these drugs to optimize those drugs, which are drugs actually in the market. They are highly effective. For example, there is a drug for, as I mentioned yesterday, one of the targeted therapy started from my institute. The very first drug came out. Uske baad mein now there are 74 drugs in the same class which are in the market. But one of the recent drug is known as ponatinib. Highly potent, बहुत effective है at a picomolar concentration and single digit nanomolar concentration, but it is highly toxic, cardiotoxic. So drug was withdrawn कि वो असर तो कर रहा है but उसके कारण इतना cardiotoxicity, heart problem हो रही थी patients को, तो drug was withdrawn from the market. So ERG is, for example, is one of the things which is tested. So this is LD50, as I showed previous slides, maybe lethal dose 50% that causes the acute toxicity. वो डोज उससे नीचे होना चाहिए. अगर उस डोज पे है जो 50% टॉक्सिसिटी करता है then that's not the right dose. So all these doses, the CYP is an enzyme. वो CYP को inhibition कितना होता है, मेटाबोलाइट वो ब्रेक डाउन करता है, लिवर एंजाइम है. So just to recap, all these, now you can slowly, hopefully I'm assuming that you have an appreciation of what it takes, कितने disciplines involved है एक ड्रग को मार्केट में लेके आने के लिए, कितनी एक्सपर्टीज चाहिए, कितनी सब स्पेशलिटी चाहिए, एक चीज़ की समझ आनी जरूरी है in order to see. And this is again a very this is again a very simplified version of how many different things which are studied before drugs are developed. So basically idea is you are juggling many balls in the air and you're trying to keep each ball in the air, and that is the property. You're juggling multiple different aspects. Admi ठीक होना चाहिए, properties ठीक होना चाहिए, distribution ठीक होना चाहिए, effect ठीक होना चाहिए, सब कुछ को balance करते हुए आगे लेके जाना. And as I showed earlier, as you can see now, जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक ड्रग को वहाँ से, एक कैंडिडेट को वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए कितने जो हैं चक्र व्यू में से निकलना पड़ता है, कितनी कसौटी से निकलना पड़ता है to be successful, to reach to the point of, to the site of action to become a drug. So देखिए कितनी जो हैं, all these tests have to be passed for a drug to become a drug. And so that is why a design of a structure, design of a drug is extremely, well, depending on if you like, it's a lot of creative fun exercise when you are thinking of many properties, many different aspects, and you are just working on that chemical structure, even a small molecule case, in order to see कि वो आपका इस तरह से हो कि आपको वो सारे जो चक्र व्यू हैं उनमें से पास हो कि आपका ड्रग जो है एक्चुअल ड्रग बन जाए. So this is again iterative process. This is what I was trying to say, that you have to
इन विट्रो स्टडीज़ पहले आउटसाइड द एनी इन वीवो एनिमल स्टडी के बाहर इन विट्रो पेट्री डिश में स्टडीज़ वो पास होता है, देन यू हैव टू हैव फार्माकोलॉजी। अगर फार्माकोलॉजी काम नहीं करिए फिर से सिंथेसिस कीजिए, फिर काम नहीं करिए फिर ऑप्टिमाइज करिए उसको। सो इट इज़ अ वेरी इटरेटिव प्रोसेस, again and again process up until you are satisfied that all these properties are meeting. When all these are satisfied in vitro, not going into the animal body, that's when you take inside the in vivo work. And that's when this whole process of understanding and the in vivo performance. So in vitro properties, सारे rules उसको जो भी properties के पता हैं, करते कराते you bring it here, do in vivo test. Do in vivo test, and again it has to pass through. So just imagine, just for the ADME, just for the optimization, how many different, and here, how many different things are taken into consideration. कि आपका मॉडल ठीक होना चाहिए, आपका एसिड करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अपनी तरफ से तो ऐसे बना दिया कि बहुत अच्छा है, मेरे को बताता है, बट इफ इट हैज़ नो रेलेवेंस कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, तो आपका ऐसे इज जस्ट एन ऐसे, इट्स नॉट गाइडिंग यू, it is not guiding you to design the drug. So see how many different things are taken into consideration: absorption, metabolism, distribution, brain exposure, dosing, bioassay, toxicity, just a few of those. In सब का ध्यान रखते हुए that your drug has to meet all these conditions. And then now based of, again there is just a few examples of various molecules just based on their lipophilicity. वो कितने हैं ऑर्गेनिक हैं वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, लिपोफिलिसिटी क्या है, एज यू कैन सी हियर दे फॉल एट, उनकी लॉग पी वैल्यू क्या है, सी मॉर्फिन कहाँ पे है ऑन द लॉग पी वैल्यू इसके ऊपर, एंड देन वेदर दे क्रॉस द बॉर्डर और नॉट. Yeah, vinblastine is a cancer drug, vincristine is a cancer drug, morphine as we were talking earlier is a painkiller and many other things for sedative it is given. But उन सब का जो है असर L-DOPA for depression drug brain के लिए दिया जाता है. And so polar surface area उसका क्या है, उसकी log P polarity उस ड्रग की क्या है, बेस्ड ऑफ दैट इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे विद ओरल ड्रग और आईवी ड्रग कितने टाइम देना है, क्या देना है. सो होपफुली विद ऑल दिस यू हैव एन अप्रिशिएशन अंडरस्टैंडिंग करके क्या व्हाट इट टेक्स कि एक ड्रग को करने के लिए. बट अगेन एज आई एम्फसाइज अगेन एंड अगेन, as a chemist, as an organic chemist, you have lots and lots of advantage because you can understand the properties, you can design the properties, you can manipulate the properties. So far what I have been telling you is, you know, the things which are the properties taken into consideration important, but again in vivo and in vitro में क्या क्या किया जाता है, which is quote unquote preclinical part. कि preclinically before it gets to the clinic, right? So pharmaceutical industries जो करती हैं, मेजर बायोटेक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो करती हैं, उनका सारा इन्वेस्टमेंट, टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज इज टू डू ऑल दीज स्टडीज बिफोर इट गेट्स टू क्लिनिक. तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें होती है कि एक ड्रग को कैसे निकालना. और नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स, कितने सारे डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं. बट वही वो सब करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज यू हैव टू हायर दैट मेनी पीपल, दैट मेनी एक्सपर्ट्स. वो अपना पूरा ब्रेन पावर लगाते रहेंगे इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, टू कम विद अ कैंडिडेट, कम विद अ ड्रग दैट कैन गो टू द क्लिनिकल ट्रायल. सो दिस इज यू नो प्री क्लिनिकल स्टडी टू दो टाइप जो मैंने आपको अब तक के लिए बताया. बट देन अगेन अल्टीमेट गोल फॉर एनी ऑफ दीज थिंग इज to get to the clinic, right? जो ये सब कर रहे हैं पेपर छापने के लिए तो सिर्फ कर नहीं रहे, हमें भी हो सकता है करें, but ultimate goal is to make it into, convert it into a drug which can help other humans. So clinical trials जरूरी हैं. So preclinically जो हम जितने करते हैं, yesterday there was a question and I think a couple of times question asked के why when we are testing in animals will it really work in humans? So answer is we don't know.
बट आप ह्यूमंस को तो गिनी पिग तो नहीं बना सकते ना कि भाई थोड़ा टॉक्सिसिटी कोई बात नहीं बेचारा मर गया, वो तो काम नहीं चलेगा ना। आपको पहले टेस्ट करना है एंड देन देयर बॉडी के जो मेकअप है, इट इज़ नॉट ऑब्वियसली नॉट आइडेंटिकल एज ह्यूमंस, नहीं तो वो भी ह्यूमंस होते, बट एज बेस्ट एज वी नो कि उनका जो मैकेनिज्म है इज क्लोज टू व्हाट वी सी इन द ह्यूमन, सो दोज आर द मॉडल्स विच आर कलेक्टेड। माइस में स्टडी की जाती है इसलिए नहीं कि माइस इज सिमिलर टू ह्यूमंस, बिकॉज दोज आर रिलेटिवली चीपर। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। माइस ब्रीडिंग, आई डोंट नो यहाँ पे ब्रीडिंग को या किसी भी डिपार्टमेंट पर यहाँ पे होती है, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी या वेटनरी यहाँ पे स्कूल है या वेटनरी, बट ब्रीडिंग जो है अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इंडिया हो ब्रॉड हो, वो अपनी माइस ब्रीडिंग खुद करते हैं बिकॉज इट्स रिलेटिवली ईजियर टू डू। If you do the same study in pigs or in even mice or rats में जाओ, they are expensive. Then you going to pigs or जो rabbits, they are more expensive. And to taking it to dogs and for monkeys, it's like एक monkey study. One of the largest monkey colony in the US is in my university. half a billion dollar का उनका जो सिर्फ रिसर्च वर्क है comes from industries। इंडस्ट्री जो करते हैं, इंडस्ट्रीज के पास में तो ये सब है नहीं क्योंकि उनको जरूरत नहीं है एक ड्रग के लिए इतना पूरा मंकी कॉलोनी रखें, बट देन इट्स द ओल्डेस्ट वन विच वाज सेट अप बाय जापानीज ग्रुप इन 50s में, एंड देन यूएस गवर्नमेंट टुक इट ओवर एंड नाउ इट्स बीइंग रन। बट पॉइंट बीइंग, उसके लिए उसका मॉडल को बनाना, तो जितने कई जो जोड़े ड्रग है, एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं, व्हाटएवर दोज ड्रग्स आर विच आर इन द मार्केट व्हेन दे कम देयर, उसके लिए जो मंकी स्टडीज, मेनी ऑफ दीज स्टडीज हैपन इन आवर यूनिवर्सिटीज फॉर कंपनीज, क्योंकि उसका जो मॉडल बनाना, ठीक मॉडल बनाना, मंकी की क्या एज होनी चाहिए जिस पे वो टेस्ट किया जाए, जो कि रेलेवेंट टू व्हाट इज द ह्यूमन, ट्रांसलेट करने के लिए उसका इफेक्ट होगा। जस्ट सिंगल मॉडल कुड बी about 250 to 300,000 US dollars, जो कि 2 से 3 करोड़ एक मंकी स्टडी करने के लिए। तो जस्ट इमेजिन, नॉट पीपल, नोबडी कैन अफोर्ड दैट अप अंटिल इट गेट्स टू दैट पॉइंट। सो उसके लिए कराने के लिए दिस इज अ वेरी स्टेपाइड, वेरी टीडियस एंड हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो इसीलिए जो क्राइटेरिया बने हुए कि कैसे उसको फिल्टर कर दो कि पहले ही पता चल जाए काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए बड़े सारे इन विट्रो टेस्ट बने हुए हैं, इन विवो टेस्ट बने हैं सिंप्लीफाइड वे में, सो यू नो दैट वेदर इज गोइंग टू वर्क एंड देन यू स्लोली ग्रेजुअली। सो एजेंसीज लाइक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस में है, जो रेगुलेशन, जो अप्रूवल देता है ड्रग के लिए, उनका क्राइटेरिया है कि इन मैनी केसेस यू हैव टू शो इन 2 स्पीसीज, 2 डिफरेंट स्पीसीज के अंदर आपने अपने ड्रग की सारी स्टडी शो करनी होती है। एक जैसे माइस है, रैबिट हो गया, या कुछ केसेस में डिपेंडिंग ऑन व्हाट ड्रग एंड व्हाट डिजीज इज, यू हैव टू शो इट इन मंकी और डॉग्स। एक एक को करने के लिए यू कैन जस्ट इमेजिन, एक एक करना, स्टडी करने तो 2 से 3 करोड़ रुपए सिर्फ एक को करने के लिए चाहिए। एंड देन इफ यू हैव टू डू इन फ्यू टू टेस्ट दैट, सो दैट इज हाउ दिस ग्रेजुअल पाथ उसका बना हुआ है। एंड इट्स नॉट कि सीधा क्योंकि ह्यूमन में, सीधा क्योंकि उसमें क्यों नहीं जाते, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोसेस टू ड्रग डिस्कवरी। सो एनीवे, so ultimate goal is, as we've been talking, is not कि आपने in vitro करके देख लिया और सीधा चलो सीधा humans में ले जाओ, it's not possible, क्योंकि in vitro में तो आपको देगा, क्योंकि condition ये है कि आपने, just think for a second, if you develop a drug, the idea is to the drug has to be effective inside human body. If you take those enzymes and put it in a petri dish, वो सिर्फ एक अकेला एंजाइम है, एक सेल है। ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर कुदरत ने बहुत सी चीज़ें और डाली हुई हैं, आप उसको डुप्लीकेट तो कर नहीं सकते इतना आसानी से बॉडी के बाहर, राइट। सो अभी जैसे कई मॉडल आ गए हैं, और हैव यू हर्ड द टर्म ऑर्गेनॉइड्स, स्फेरॉइड्स एंड ऑर्गेनॉइड्स। सो 3D मॉडल्स यू कैन क्रिएट इनसाइड, दोज आर 3D मॉडल्स। PDX, patient derived xenograft model, which is, so initially previously what and even now continues to happen is you have to do in vitro study, petri dish के अंदर आपने एंजाइम ले लिए, प्रोटीन से लिए, उसका टेस्ट कर दिया, दैट्स द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे। चलो आपको पता चला काम करता है या नहीं करता है, अब उसको आगे लेके जाना है 3 डायमेंशन के अंदर। सो ये ऑर्गेनॉइड मॉडल्स और जीनोग्राफ मॉडल अपने माइस में किया। अब माइस में भी किया कि डजंट मीन जो माइस में किया, माइस आर नॉट ह्यूमन, तो उसकी जो फिजियोलॉजी है इज नॉट सेम एज द ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। सो देन इन पास्ट 15 years or so
there is another model, type of model developed, which is called PDX, patient derived xenograft model. In that case, what happens is you take a sample of, for example, let's say in case of cancer, triple negative breast cancer or breast cancer, for example, you take a piece of the patient sample, you engraft inside the mice and you let it grow. उसमें से लेके second passage, then you put into the next generation. Idea is कि by that जो tissue है is inside the xenograph के अंदर, वो उसके अंदर आ जाए. So now it's in 3 dimension. Then you study your drug in there. So it is not human, but it is one step closer to what you can see. But उसमें भी एक पूरी अपने आप में फील्ड है, क्योंकि बहुत जल्दी कर दिया तो माइस के सेल्स होंगे, बहुत लेट किया तो भी माइस के सेल्स होंगे, क्योंकि आफ्टर सम टाइम द होस्ट विल टेक ओवर द गेस्ट सेल्स. तो उसकी भी अपने आप में फील्ड है कि कितने पसाज पे उसको करना नहीं करना. बट यू सी दैट्स मॉडल टू क्रिएट द राइट मॉडल्स, ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स, एक्स वीवो ह्यूमन मॉडल्स. एक्स वीवो ह्यूमन बॉडी के बाहर है, बट वो ह्यूमनाइज्ड मॉडल्स हैं जो बनाए गए, उनमें टेस्ट करना. सो यू आर स्लोली उसके अंदर फिल्टर डालते जा रहे हैं कि आपका ड्रग पास कर रहा है, वो टेस्ट को पास कर रहा है, तब धीरे धीरे उसको आगे लेके जाते हैं. एंड इवन आफ्टर दैट it is still not humans, you don't know whether it's going to work or not, but you hope. But that's why इतने सारे उसमें checks and balances हैं कि किसी भी स्टेज पे अगर नहीं काम करता तो जरूरी नहीं है कि सीधा ह्यूमन पे ले जाओ. You don't want to, you know, और उसके एक तो बहुत एक्सपेंसिव है. If it is not going to work, then what is the point of taking it to the humans, right? और most importantly the safety. अगर वो safe नहीं है तो you cannot just use human as a guinea pig और टेस्ट करना शुरू करो. So that's why all these developing right model, choosing right model, किस डिजीज के लिए आप कर रहे हैं वो मॉडल उसके लिए काम करता भी है नहीं. ऐसा नहीं कि पिग में किया तो सबको पिग में कर दिया और मंकी में किया तो सबको मंकी में कर दिया. किस डिजीज के लिए, किस काम के लिए, whether it is relevant or not, that understanding. So as you can see, the reason I'm mentioning all of these things is so you have an appreciation of what really takes. So that's what basically experimental therapeutics is. It's a field which is multidisciplinary. You bring multidisciplinary, but as a chemist, again, I'm emphasizing again and again, as a chemist, you can look from the lens of chemistry into all these pieces step by step. Before you know, you become into a medicinal chemist or you become like a toxicologist, pharmacologist, you become all of that. But many of the leading pharmacologists, toxicology, ADNI wale log, PD wale log, they are trained chemists in the world. They are trained chemists because they look from the chemistry lens. They understand कि बफर है तो बफर की सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, ह्यूमन प्लाज्मा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आपके ड्रग की प्रॉपर्टीज क्या होगी. बट दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर डन, मॉडल्स वगैरह हों. सो इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स नाउ आई विल जस्ट एम्फसाइज ऑन द क्लिनिकल साइड कि क्या है, जस्ट इन विट्रो और इन विवो प्री क्लिनिकल पार्ट. सो इफ यू लुक एट, एज आई मेंशन अबाउट डोज, रिमेंबर जो डोज के बारे में अगर बात करें तो लुक हियर कि कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. एब्जॉर्प्शन, प्लाज्मा में गया कितना गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ या मेटाबोलाइट होके बाहर हो गया वो. सो आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ. सो वी वर वर्किंग फ्यू इयर्स अगो, वी वर वर्किंग ऑन एक ड्रग जो यूरोप में अप्रूव था, यूएस में अप्रूव नहीं था. सो वी वर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग टू सी टू ब्रिंग इट टू फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके लिए ड्रग के लिए. अब उस ड्रग का चैलेंज ये था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जब हम उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ड्रग इज सो हाईली सॉल्युबल कि 97% वो क्लियर हो जाता ड्रग फटाफट. ड्रग आपके इन विट्रो में बहुत अच्छा काम करता था, इन वीवो में उसका बहुत ज़्यादा हैवी डोज देके करो तो उसका असर नज़र आता था. बट वो 97% वो मेटाबोलाइट ना क्लियर हो के बाहर हो गया, ओनली 3% उसके अंदर बचा. तो आप उसको बकेट लोड लोगे थोड़ा सा असर करने के लिए. दैट्स नॉट द वे टू डू इट. सो वी एज ए केमिस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर कि उसके थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टी को कैसा चेंज करें कि उसका जो एक्टिव पार्ट है वो मेंटेन रहे मगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे. वो प्लाज्मा के अंदर सिर्फ आधे घंटे में 97% निकलने के बजाय वो कम से कम 6-8 घंटे तक प्लाज्मा के अंदर रहे. All we did was we designed a lot of analogs around that and then started testing those analogs. Now the other challenge of that drug was, वो agree करते हैं, the other challenge of that drug was कि वो ड्रग इतना उसकी लिपोफिलिसिटी, जैसे मैं आपको अभी
I showed you the property lipophilicity. The other thing about that drug was कि वो ड्रग जो है इतनी जल्दी से मिल जाता था कि उसको टेस्ट करने की कोशिश करो, किसी भी वो क्रोमेटोग्राफ किसी में निकलता ही नहीं था, वो सेल के अंदर कहीं चिपक जाता था, तो आपको पता ही नहीं, आप देखने की कोशिश कहीं पे यू डोंट सी एनी पीक, दैट्स ऑल यू कैन डू कि अब वो पीक के अंदर पड़ गया, ड्रग असर कर रहा है, विच मीन्स समथिंग इट इज इनसाइड, बट यू कैन नॉट फॉलो द कॉन्सेंट्रेशन कि कितना अंदर गया कितना बाहर गया. So then as a chemist you go back again slightly, उसका salt बनाएं या change the property और change the उसका जो formulation उसको change करो, but again all chemistry. So we did all of that. So drug which was in Europe, approved in Europe, we brought the drug to multiple sclerosis, we made changes to the drug और उसका जो clearance 97% निकल जाता था आधे घंटे में ड्रग बाहर, उसका एनालॉग्स बना के चेंज किया कि वो 6-8 घंटे तक प्लाज्मा में रहता था. एंड देन व्हेन यू स्टडी वी सॉ दैट आवर न्यू कैंडिडेट वाज मच मोर इफेक्टिव देन द ओरिजिनल ड्रग. बट आई एम जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट. सो अगर वो जल्दी एलिमिनेट हो गया, अगेन गो बैक, डिजाइन द ड्रग, बिकॉज एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन वेयर द एक्शन इज, इफ इट इज समथिंग टू डू विद ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल कुछ देना है, इट हैज टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. अगर वो पास ही नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं होना, उसका ब्रेन पे असर नहीं होना. सो यू अगेन ट्राई टू प्ले विद द प्रॉपर्टी. दिस इज अगेन इन द प्रोसेस, यू नो इतने स्टेजेस होते हैं ना, एज आई मेंशन कि ड्रग आगे जाएगा या नहीं जाएगा. देयर आर मेनी गो नो गो डिसीजंस. सो इन द फार्मा इंडस्ट्री हमेशा दे आर वर्किंग ऑन इसको आगे लेके जाएं या नहीं लेके जाएं. बट जस्ट इमेजिन इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. वो किसी गलत ड्रग को आगे लेके जा रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबकी सैलरीज, कितने एसेट्स, कितने मॉडल, बिफोर यू नो वो करोड़ों में आ जाता है. अगर उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती देन उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि स्टॉप हियर, लेट्स फर्स्ट चेंज इट. सो दोज गो नो गो डिसीजंस आर द फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उनका ब्रेन इज ट्यून टू गो नो गो डिसीजंस बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंटरप्राइज. सो बट सी how many different aspects that play into role. This is a simplified version. Look at this for clinical development. This is a very simplified version again. A simple flow chart कि अगर आपने ड्रग लिया है यहाँ पे लूप पर जाके, okay, now you reach to the point कि सारे प्री क्लिनिकल जो हैं आपके they are good. You agree कि जितने प्री क्लिनिकल मॉडल्स इतने थे, when I say preclinical including in vivo model, animal models, they give satisfactory results. Okay, this is fine, now let's take it forward. Now you enter into phase 0 or phase 1 clinical trial. You enter clinical trial, you bring it to this point and see in the phase 1, उससे पहले I'll bring back one of my lecture tomorrow कि clinical trials के अंदर approval क्या लेने पड़ते हैं, किस तरह से लेने पड़ते हैं. But again, these are various decision point. आपने so phase 1 phase 2 की क्या difference, I'll bring that tomorrow, I'll not mix it right now. But point what I'm trying to say is for clinical development के अंदर again there are so many steps involved after in vivo काम हो गया है, क्योंकि अब now you are entering into the humans के अंदर. You have to be extremely careful कि किस चीज को क्या टेस्ट करना है and how much to take forward or not to take forward. So this is just to give an, you know, again to emphasize the relationship between dose and the effect. So dose जो दिया गया है, whether again it is reaching to the site of intention action or not. If it is not, then you have to change the dose, you have to change the formulation, you have to change the route of administration, oral, dermal, IV, you change so it reaches. So again, as you see here, same point. मैं क्या dose कुछ heavy हो गया था. I don't know, is it still raining outside? Maybe because of